हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा मैथ्स। आज वेक्टर रो लास्ट वीडियो माने फोर्थ वीडियो या पर हम 3D अपलोड करिया। या पूर्व बहुत गुडे टॉपिक मु अपलोड कर साथे जेमते डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इंडेफिनेट, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ आई एम कमिंग विथ वेक्टर्स। एमती सब वीडियो मु अपलोड करी, सब चैप्टर अराउंड ईच चैप्टर वीडियो मु अपलोड करी। एंड सिंस दीज आर रिवीजन लेक्चर्स मु चेष्टा करबी जेतरु जेते बेसी थ्योरी आपन दे पारि किंतु रिवीजन लेक्चर बेसी रु बेसी क्वेश्चन सॉल्व करबी और सेटा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज जो चैनल रे नुआ अछि मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। दैट इज बिजनेस मैथ कर दे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ वेक्टर नॉर्मल टू दिस एंड दिस। नॉर्मल वेक्टर माने द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार। मान लियो let a bar is equal to जोड़ा फर्स्ट वेक्टर दिया है ताको a bar नहीं जानते, a bar is equal to I plus k and b bar will be equal to I plus j. The vector normal to both a bar and b bar is a bar cross b bar. The vector normal to that is perpendicular to, normal to मतलब ब्रैकेट रे मु लिख दो परपेंडिकुलर टू, यार मतलब सेम। अब जदि को वेक्टर दुईटा वेक्टर नॉर्मल वेक्टर माने दुईटा वेक्टर जो परपेंडिकुलर वेक्टर आउछ तार कथा आउछ, राइट। सो द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a bar and b bar is same as the normal vector of a bar and b bar. So the vector normal to or perpendicular to both a bar and b bar is a bar and b bar is a bar cross b bar. That is a bar cross b bar equal to केंति बाहर करे डिटरमिनेंट ना। फर्स्ट रो इज I j k, इठी I रो कोएफिशिएंट 1, j नाही 0, k रो कोएफिशिएंट 1, I रो कोएफिशिएंट 1 0 1, k नाही तो k रो कोएफिशिएंट 0। सो दिस इज इक्वल टू I कैप इनटू 0 माइनस 1। डिटरमिनेंट तो सॉल्व करियो माइनस j कैप इनटू 0 माइनस 1 एंड प्लस k कैप इनटू 1 माइनस 0। So this is equal to minus into I cap minus minus plus j cap and plus k cap is the normal vector. So ये 2011 रास्ता and this is a textbook question. So बोले मन रखो जो normal vector कथा होची माने perpendicular vector कथा होची। The vector which is perpendicular to both a and b is same as the normal vector of a bar and b bar. तो normal vector में cross product नहीं। So let's move to the second question. Find the area of the parallelogram which diagonals are the vectors this. Look, if जदि गोटे वेक्टर parallelogram अछि जरा diagonal अछि d1 and d2 with given diagonals, area of the diagonal, area आनिवार formula अछि half of magnitude of d1 bar cross d2 bar. This is with given diagonals. जदि side दिया है, if a bar and b bar are the adjacent sides, then area equal to only cross product of a cross b. जदि डायगोनल अछि हाफ रे मल्टीप्लाई करबे, डायगोनल थरे हाफ रे मल्टीप्लाई करबे नाही, करेक्ट। सो लेट्स मूव। गिवन d1 डायगोनल 1 ना, डायगोनल 1 is equal to 3 I cap plus j cap minus 2 k cap. This is d1 bar and d2 bar is equal to I cap minus 3 into j cap plus 4 into k cap. This is d1 and d2. Now find the value of d1 cross d2. Find the value of d1. How do you get the cross product? By using a determinant I j k. Now in d1 the coefficients are 3, 1 and minus 2. In d2 this is 1, minus 3 and 4. Now let us solve this. So this is equal to I cap into 4 minus 6. 4 minus 6 will be minus 2 minus j cap into 12 plus 2. 12 plus 2 will be 14 plus k cap into minus 9 minus 1 will be minus 10. So this is equal to minus 2 into I cap minus 14 into j cap minus 10 into k cap. Now let us find the magnitude of this. d1 bar cross d2 bar the magnitude. Minus 2 का square. Magnitude केंद्र बाहर करिए I j k रो कोएफिशिएंट रो स्क्वायर अवतार रूट minus 2 square minus 14 square then minus 10 का square and the square root. Minus 2 square will be 4. This is equal to 4 plus 14 square is 196, 10 square is 100. So 196 plus 4 will be 200 plus 1 will be 300 and square of 300 can be written as 100 into 3. 100 into 3. Root of 100 will be 10. 10 root 3. So this is d1 cross b2. Therefore area of the parallelogram is area of the parallelogram. Parallel
graph. This is area of the parallelogram is half of d1 cross d2 the magnitude. This is when the diagonals are given. So the area they same form. Khali half rahibani a cross b. So this is half of 10 root 3. 2 cancel kar diyo. This will be 5 root 3. This is the answer. Area is the square units. Right? This was came in 2011. Then that is again a textbook question. So let's move to one more question. Time pass बिल्कुल करेगा नहीं. Exam paper होती. तो rigorously पढ़िएगा. Determine the value of m for which the following vectors are orthogonal. So let us understand what is orthogonal. Orthogonal is nothing but perpendicular. Orthogonal is perpendicular vectors. If two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. So a bar dot b bar equal to 0 if and only if a bar perpendicular to b bar. What is if and only if? माने दुईटा जगह हो. दुईटा जगह माने कौन हो? जदि दुईटी वेक्टर परपेंडिकुलर से मानकर डॉट प्रोडक्ट 0. उल्टा कहिबे जदि दुईटी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट 0 दे आर परपेंडिकुलर. So in both ways, right? So here is given. Let a bar vector consider कर दो. A bar equal to m plus 1 into I cap plus m square into j cap minus m into k cap. Let this will be a bar, and b bar is the second vector, m square minus m plus 1 into I cap minus m into j cap plus k cap. A bar and b bar. These are perpendicular. Jodi perpendicular achandi, therefore their dot product is 0. Semanakar dot product kaun hojo 0. Dot product kenji var karibe I dot I 1, j dot j 1, k dot k 1. Remaining all are 0. So I ro coefficient m plus 1 into this is m square minus m plus 1. M square into minus m will be minus m cube. Minus m into 1 will be minus m, and this is equal to 0. Multiply kar diyo. M into m square will be m cube minus m square plus m square minus m plus 1 minus m cube minus m equal to 0. Minus m cube plus m minus m gets cancelled. Minus m square plus m square gets cancelled. Minus m को right side ले लीजिए. M equal to 1. ओहो बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए कि मतलब बड़ा कैलकुलेशन होगा किंतु एक मात्र क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा. राइट? So this was came in 2011 question. तो खाली इंपोर्टेंट ए बेसिक्स मान रखिए. जदि दुईटी वेक्टर ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर. और जदि दुईटी वेक्टर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. डॉट प्रोडक्ट केंति बार करिए I डॉट I को 1 करिए, j डॉट j को 1 करिए, k डॉट k को 1 करिए. रिमेनिंग ऑल आर 0. Question number 4. This is a very important question. LHS. Question based on scalar triple product. This is a bar plus b bar plus c bar, and c bar plus a bar. The scalar triple product all these three equal to 2 times of a bar, b bar, c bar. So this can be written as a bar plus b bar dot product with b plus c cross product with c plus a. Right? A plus b dot b plus c cross c plus a. Now a dot b cross c का फॉर्मूला ऐसा ही है. So this is equal to a plus b dot को as it is रख दिया तो क्रॉस प्रोडक्ट बाहर करो. This is b cross c, b रो क्रॉस प्रोडक्ट c सहित. So this will be b bar cross c bar plus b bar cross a bar plus c bar cross c bar. c cross c कौन है जो 0 है जो पर जाएगा c cross. So this is equal to, this will be a bar plus b bar dot product with, this is b cross c plus b cross a. C cross c will be 0 bar plus c cross a. Now take the dot product with a and then with b. So a सहित सबुरे dot product. So a bar dot b bar cross c bar plus a bar dot b bar cross a bar plus a bar dot c bar cross a bar. Then with b plus b bar dot b cross c plus b bar dot b cross a plus b bar dot c cross a. So this is equal to
A bar dot B cross C equal to A bar B bar C bar. A dot B cross A equal to A bar B bar A bar plus A dot C cross A equal to A bar C bar A bar. B dot B cross C will be B bar B bar C bar. B dot B cross A equal to B bar B bar A bar. B dot C cross C will be equal to B bar C bar A bar. Okay, so this is equal to A B C. This is your A bar B bar and C bar. A B A, these two are identical. So जब scalar triple product है कोई भी दो vector identical, then the value is 0. Here also A and A are identical, so 0. B and B are identical, therefore 0. B and B are identical, therefore 0. B, C, A, these are in cyclic order. No vectors are identical, but they are in cyclic order. So cyclic order vectors को हमें A, B, C लिख करेगा. A, B, C is same as B, C, A is also same as C, A, B. So A bar B bar C bar plus A bar B bar C bar will be equal to 2 times A bar B bar C bar, and that is what your RHS is. So it's a very important question. ये यारो जेई रे मध्य आछे question एमती देतो this is 2 times जदि माइनस हेगला प्लस जगह माइनस हेगला 0 हां मन रखिए इंस्टेड ऑफ प्लस जदि क्वेश्चन रे माइनस देछि तो आंसर केते आसो 0 आसो प्लस रे 2 टाइम्स A bar B bar C bar माइनस रे केते आसो 0 आसो अब सॉल्व करे टेक्निक एकदम से सेम. Now move to next question. What the next question is? This is a proof. Prove by vector method that the altitudes of a triangle are concurrent. गोटे ट्रायंगल रो जदी अल्टीट्यूड बाहर करिवे से अल्टीट्यूड कोन हो concurrent हो. What do you mean by that? Concurrent मतलब all are passing through a single point. So let this vector is A, this point is B, this point is C, and this is a triangle ABC. Now let us draw 3 altitudes. This is one of the altitude. Let this will be AD. Draw one more. BE. And consider that AD and B are passing through the point P. दुईटा straight line अछि कोई ना कोई point रे pass करियो. Let the point be P. By using these two, आमे कौन proof करछे आबे AD and B are two altitude and they are passing through P. By using these two, we will prove that the third altitude which is passing through C, third altitude कौन होगा C रू pass करियो. जो altitude C रू pass करियो that also will pass through P. जदि third टा भी P रू pass करियो ना हे गेला concurrent. तो कौन proof करेगा? Let AD PE and CF are the altitudes of triangle ABC. Triangle ABC रो ये altitude. जदि let AD and BE passing through P. AD and BE passing through P. यदि AD and BE P रू pass करिवे, therefore AD bar perpendicular to BC bar. Why? Because they are the altitudes. So the AD bar perpendicular हो, since AD passing through P, AD BC को perpendicular है, काहे ना altitude माने perpendicular लंबो, हाँ perpendicular लंबो जोड़ा को तो सेटा, right? तो AD perpendicular to BC. And since AD जो line है ना से P रू pass करछे, therefore AP is also perpendicular to BC. जदि perpendicular हेबले ए दुईटा वेक्टर रो जो डॉट प्रोडक्ट होबो that will be always equal to 0. AP dot BC equal to 0. Now AP को केमति लिखबे? AP can be written as P bar minus A bar dot product with C bar minus B bar, and that is equal to 0. So this is equal to P bar dot C bar minus P bar dot B bar minus A bar dot C bar plus A bar dot B bar equal to 0. Let this will be equation number 1. Now BP in the same way, BP dot AC is also equal to 0. BP मतलब P bar minus B bar dot product with AC मतलब C bar minus A bar, and this is also equal to 0. So this is equal to P bar dot C bar minus P bar dot A bar minus B bar dot C bar
minus minus plus b bar dot a bar and this is equal to 0. Let this will be equation 2. तो ए दुईटा इक्वेशन को यूज करिए आमे प्रूफ करिया को चेष्टा करिया कि सी एफ इज आल्सो पासिंग थ्रू पी सी एफ को थ्रू पास करियो पी रू पास करियो देयरफॉर सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी ओके तो दुईटा जब माइनस कर दियो तो इक्वेशन 1 minus 2 implies p dot c minus p dot c 0 होगा येटा प्लस है जो तो माइनस p dot b plus p dot a minus a dot c minus a dot c plus b dot c a dot b minus b dot a एटा कैंसिल हो 0 होगा तो फर्स्ट दुईटा टर्म रू यदि p bar dot को कॉमन नहीं जे दिस विल बी a bar minus b bar ए दुईटा रू यदि c bar dot को माइनस c bar नहीं जे कॉमन minus c bar को यदि कॉमन नहीं जे if you take minus c bar dot then this will be b bar minus c bar so this will be a bar minus b bar and this is equal to 0 so this will be p bar minus c bar dot product with a bar minus b bar this is equal to 0 p bar minus c bar is cp bar dot product with b bar minus a bar minus b bar is ba bar this is equal to 0 if the dot product is 0 then cp bar is also perpendicular to AB bar. That means CF passing through CF is passing through P. Passing through P. Hence concurrent. Hence they are मतलब common altitudes are concurrent. Concurrent माने बुझो होती है concurrent माने more than two lines passing through a single point. The basic line गोटे point रू pass करे. So this is again an important question. This was came in 2006, 12 and many more times. यही क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भलो प्रैक्टिस करिए राइट तो एमती मु वीडियो गोटे गोटे नहीं के आसी राइट अभी नेक्स्ट वीडियो हम कोन आनिबा नेक्स्ट वीडियो आई विल कम इन विथ 3D इंपोर्टेंट हां 3D रो लाइन 3D रो प्लेन तार अलग अलग कांसेप्ट आनिबा और तार क्वेश्चन आनिबा राइट ठीक अछि जदि मो चैनल रे नुवा आछनी मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और मोर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करिए मिसबा नेक्स्ट लेक्चर और सेतल पर्यंत पढता गुड लक